According to question, you are given many resistance and capacitor and inductor. Okay, these are connected to a variable DC source in first to circuit and AC voltage source of 50 hertz frequency. Okay, in different diagrams. So in column 2, the circuit of the AC and DC are shown in the figure. So when current I, steady current of DC or RMS of for AC flows through the circuit, the corresponding voltage V1 and V2 indicates the circuit are related as shown in the column 1. So we have to match the column. Okay. So in first two diagrams in column 2, we have a DC source, variable DC source. In diagram R, S and T, we have a AC source. Okay. So from that circuits we have to match the condition of the current and the potential V1 and V2. So okay, so first of all we will see the circuit number P. Okay, in that circuit that source is DC source. Okay, so DC source, with DC source the potential drop with across the inductor is 0. Okay, because there is no change in current and direction of the current, so the potential drop across the inductor will be 0. So all the potential drop between the uh, of the voltage source will be will be on capacitor. So capacitor potential drop will be equal to V. Okay, so we will get V1 is equal to 0 and V2 is equal to V, and the current, because a capacitor is connected to in that circuit, and as we know that the current in a circuit with a DC current in a circuit with a capacitor is 0, so the current will be 0. So I is equal to 0 and we will get V1 is equal to 0 and V2 is equal to V. Okay, so according to that option A is not correct, B is not correct, C can be correct. So according to V1 is 0 and V2 is V, so that is connected with C. Okay, and the D is also not correct for B. Okay, now we will discuss about the second diagram, that is Q. And in the diagram also we have a DC source, and again potential drop across the inductor will be 0, so V1 is equal to 0. Okay, and all the potential drop of of the source will be on resistor, and V2 will be equal to V. Okay, in that circuit the current is not 0. In that circuit the current I is equal to V upon R, when the potential drop V2 is equal to IR, and the V1 is 0 and current is not equal to 0. Okay, so according to that relation, statement A is V1 is proportional to I, so statement A is wrong. Okay, in column 2, statement B, I is not equal to 0, that is correct, and V2 is greater than V1, means B is also correct for that circuit, so B. Now check for C, V1 is 0 and V2 is equal to V, that is also correct, so option C will be correct for that circuit. And D, I is not equal to 0 and V2 is proportional to I, that is also correct because V2 is equal to IR, so D is also correct for Q diagram. Now we will discuss about the diagram R. Okay, in that diagram, that is the inductor and that is the resistor, and they are connected with a AC source of 50 hertz. Okay, so in that circuit XL is equal to 2 pi FL. Okay, so XL is equal to 2 pi, the value of F frequency is 50 and the inductance is 6 into 10 raised to power minus 3. So we will get XL is equal to 1.8 ohm. Okay, 1.8 ohm is the resistance, and that is the less than the value of resistance of the resistor. Okay, so in that condition
the potential drop across the inductor V1 will be equal to IXL, and the V2 is IR. So as we know that the resistance is greater than XL, so we will get V2 is greater than V1. Okay, V2 is greater than V1, and current is not equal to 0. Okay, so according to that, V2 is greater than 0. So I naught is equal to 0. V1 is proportional to current. Okay, so that is also correct. So statement A is correct for the diagram. I is not equal to 0 and V2 is greater than V1, that is also correct. It means B statement is true. And C, in that circuit V1 is not equal to 0, so statement C is wrong. And D, I is not equal to 0 and V2 is proportional to I, that is also true. So option D is also correct for that. Okay, now we will check diagram S. Okay, so in the diagram we potential drop across the inductor XL is already, we know that is 1.8 ohm. Now we will find the XC. XC is equal to 1 upon 2 pi FC. Okay, so in that condition FC 1 upon 2 pi, frequency is 50 and the capacitance is 3 into 10 raised to power minus 6 micro. So we will get plus 6 in upper side. Okay, so by solving that relation, we will get the value of approximate 1001 ohm, approximate value of XC. Okay, so in that condition, XC is greater than XL. Okay, and in that condition, V1 will be equal to IXL and V2 is IXC. So in the diagram, we will get V2 is greater than V1, I is not equal to 0, and V1 and V2 both proportional to value of current. So according to that relation in C diagram, statement 1 is correct, means A is correct. B, I is not equal to 0 and V2 is greater than V1, that also correct. So that is C is also included in that option. And I is not equal to 0 and V2 is proportional to I. So that D is also correct, C is wrong. Okay, A, B and D. Last diagram means last circuit. In that circuit, we have given a resistor of 1 kilo ohm and the capacitor of 3 microfarad. So in that condition, resistance is equal to 1 kilo, means 1000 ohm, and the cap XC is equal to 1001 ohm. Okay, so the V1 is equal to IR and V2 is equal to IXC. So in that relation, because the XC is slightly greater than resistance, so V2 will be greater than V1. Okay, I is not equal to 0 and also V1 and V2 both are proportional to current. So according to that relation, we will get A is correct, B also correct, C is not correct, and D, I is not equal to 0 and V1 is proportional to I, that is also correct. Okay, so this is our answer. हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। बोला एक सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन है जो कनेक्ट किया गया एसी वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी 500 रेडियन पर सेकेंड। बोला इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट जो है R√1.25 के इक्वल है, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा इस सर्किट का, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ये टाउ इक्वल्स टू R इंटू सी के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास R इंटू सी का क्वेश्चन फाइंड करना है, कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इम्पीडेंस दे रखा है। ठीक है, मतलब Z की वैल्यू दे रखी है आपको, और ये एक कौन सी सर्किट है, आरसी सर्किट है, मतलब इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटेंस होगा, इंडक्टेंस की बात नहीं होगी इसमें। ठीक है,
और सपोज करो ये रेजिस्टेंस आर है और इसकी जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक्स सी है, जो 1/ओमेगा सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, z की वैल्यू दे रखी है r√1.25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्स सी के लिए 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटू 1.25, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.25 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1/0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आर सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/0.25 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 0.5 बन जाएगा। ठीक है, और उस ओमेगा स्क्वायर मतलब ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/0.5 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना 500 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये 500 आ जाएगा और ये सेकेंड में आएगा हमारे पास आंसर। तो आर सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 0.5 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा और 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1/25 250 सेकेंड। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो आर सी इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट आर सी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू सी, दैट मीन्स 4 मिली सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी। थैंक यू।